नहीं नहीं नहीं, अच्छा रहेगा, डोंट वरी। चल नीचे देखिए, so you can see she had a very bulbous and a very flat nose before we started, and अब ये rhinoplasty with rib कराए हैं हमने। क्या हुआ? बढ़िया है, एक मिनट थोड़ा क्लीनिंग करने दो। चलो नीचे देखिए ऐसे, ये पकड़ लीजिए आप, कैसा लग रहा है? साइड में भी दिखा देते हैं। अरे क्या हो गया? हाँ आप देखो इसमें कितना इम्प्रूवमेंट है। हाँ ये वेलकम। ये साइड ज़रा टर्न कीजिए। और ये ना, ये रिब और हड्डी है तो मतलब जाएगा नहीं कहीं, ऐसे ही रहेगा। 2 मिलीमीटर शायद स्वेलिंग रहेगा, लेकिन आपका शेप ऐसे ही रहेगा एकदम। हाँ ये स्वेलिंग है, अच्छी तरह से शेप देखो, ऑलरेडी आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, टेंशन चला गया अभी। देखिए, चलो आपको दर्द कुछ हुआ रिब हार्वेस्ट साइड में कहीं पे कुछ? तरफ ऊपर देखिए, अभी यहाँ पे भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ये आपका फ्रंट व्यू। So this was a challenging case because the skin was thick, the nose was broad, and the nose was short. So if you see here carefully, the length of the nose has been increased. So we've increased the length of the nose. How have we increased the length? We've increased the length by reducing the width and getting the nasal bones close together. And then after I've done that, we've taken a piece of rib, we've harvested it, we've shaped it up and nicely put it on the dorsum with a lot of sculpting. So that gives the height in the nose, which is actually starting from radix, the point where the nose starts and ends on the tip. Now the work on the tip also is a lot because she has thick skin, and remember when the skin is thick, it's very hard to get a pointy projection because it's very thick. So we had to use cartilage on the septum to push it forwards so that this point has come forwards and downwards. So it's like redraping that part of the nose. So you can see it now very clearly. So that's what I said, reduce the width of the nose, increase the height from the radix to the tip, get the septum, push it forward, and so you get that. And then eventually you'll see there is no cut here, so there's no alar base work. Why haven't I done that? Because the nose size is small. I don't want to reduce it anymore. We want to reduce the width by increasing the height and by stretching the entire tip complex in the forward and downward direction, right? And I'm going to explain that to you in this view. Oh side देखिए, that side. हाँ. So you can see, आप भी देख सकते हैं, you can see. So you see here, this was the length of the nose earlier. We've probably increased it by, as you can see, about 2 centimeters or so. And that's because this angle has been changed. I'll show you clearly. This is the angle from the lip. You see it's become more of a 90 degree. So when the tip is rotated down in a clockwise fashion, what it shows on the patient's nose and the face is the increase in length. The skin gets stretched, therefore the bulbous tip or the boxy tip becomes narrowed down to an extent. Then you see this was way shallow and short. So the augmentation starts from there. There's still a curve, so I haven't made it into a male type of a dorsum. There's still a gentle curve to this, which gives that feminine look even when she's in this view. There's a good tip, there's a lot of swelling, could be a small suppurative break that will come there with time. We haven't done any alar base work as I mentioned earlier. And that's this view, side view also. Right? So she was quite apprehensive about the result, है ना? रात को मैं सोई नहीं कि कैसा होगा नहीं होगा, बट तुम विश्वास करते तो मैं आई थी कि आप अच्छा ही करेंगे। अब अच्छा, अब आप खुश है ना? तो 3 दिन का नींद आएगा अभी एक ही साथ। सो गई थी। और दर्द कितना था आपके रिब हार्वेस्ट करते जगह? जैसे मैं अकेली आई ना, थोड़ा बहुत तो थोड़ा मैं मूवमेंट जनमर्जी कर दिया।
हाँ। थोड़ा बहुत से ज़्यादा नहीं है। कितना दिन तक दर्द था आपको? 2 days only। 2 days ओनली, उसके बाद दर्द नहीं था बिल्कुल। और नाक में कितना दिन दर्द था? नाक में तो मुझे कफ का प्रॉब्लम था ना, पेन नहीं था, बस कफ का इशू था, तो मैं ड्राइनेस। हाँ बस। So especially when we're doing augmentative rhinoplasty of this sort, you know, yeah, it could be that patients do have little bit of a dry throat. This is because we keep the nose blocked for a little longer. आपको 4 दिन या 5 दिन के लिए नाक बंद था, हमने बंद करके रखा था 5 दिन. So you see that is actually the reason why they have this irritation and dryness of the throat. And other than that, she's fine. We're going to put her on some more medications because remember, bony work takes 4 weeks to heal. आपको मैं हर पेशेंट को बताता हूँ ये कि अब जो हुआ है पहला स्टेज ऑफ हीलिंग मतलब अच्छा हुआ है. अब आपको दूसरी स्टेज के लिए और 3 weeks लगेगा, मतलब यू स्टिल हैव टू बी केयरफुल. हाँ, हड्डी को फ्यूज होने के लिए 4 हफ्ता तक लग सकता है, तो लगना नहीं चाहिए बाय मिस्टेक. नहा सकती हैं, जेंटली ड्राई हो सकता है, लगना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, स्विमिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्सरसाइज सब कुछ मना है. ठीक है ना. डाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मन लगे आप खा सकती हैं. ओके, चलो फिर आप कब निकल रही हैं यहाँ से? आज शाम को. ठीक है, सेफ जर्नी, ध्यान से चलो, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा वो भी लेके चलना आप साथ में. हमारा फॉलोअप नंबर है, तो वहाँ पे आप फोटोज़ डाल सकती हैं, और अगर कुछ डाउट है वहीं पे बोल सकती हैं. दिल्ली में रिमूव करवा दूँगी ना, हीलिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, आज करा देंगे. इट्स ऑलरेडी 9 days राइट फॉर. नहीं, दिल्ली में नहीं, आज अभी करके देंगे आपको, सब कुछ हो जाएगा आज आपका जाने से पहले. थोड़ा ना टाइट है, टाइट रहेगा बिकॉज हमने इसको स्ट्रेच किया है ना. कुछ नहीं होगा, वो अपने आप सेट हो जाएगा. वो टाइटनेस में धीरे धीरे सेटल हो जाएगा. सर ठीक है. थैंक यू सो मच। क्या क्या कर रही है? नहीं, वेलकम वेलकम. आप बैठो, आपको सूचर निकालेंगे. कॉल देम एंड गेट द सूचर्स रिमूव. ओनली ये जो है, इवन दो स्टिचेस आर नॉट देयर फॉर आपको तो सूचर निकालना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाला निकालना पड़ेगा, या रिब ऑल्सो. निकाल दिया उसको, वेरी गुड. फिर ओनली नोज का.